Okay, now I'm going to start the lecture. What we have discussed in our previous lecture, we have discussed about the pipelining, how to implement this pipelining, and what are the hazards, what are the problems in pipelining that we have discussed in our previous lecture, that what are the problems that we are facing in pipelining, as well as there are three problems, that is a structure hazard, data hazard, and you can control hazard. So we started with this structure hazard. What is a structure hazard? Structure hazard means it means that if you are having very limited number of resources and then you are trying to implement a pipeline, so at that time sometimes it is creating a problem. If you are having only single memory, so this is one example I have given to you, that if you are having only one memory, also you are facing problem. While for a fourth step, that fourth step require memory access for data and you require fetch instruction or your instruction memory. So if you are using only one memory, it is creating. But over here in our examples to PC, two different memories, so that is no problem. So we are having separate memory. So here it will access data memory, and over here it is accessing your instruction memory. So that will not create any problem for you. But what will happen over here? Suppose another example is that we are having floating point instruction. Floating point instruction might take more time. वो floating point instruction जो execute होगी at that time you are having some pipeline problem. So let's say that this floating point instruction executing during clock cycle. It takes 3 clock cycle for execution. So what was the problem? What is the problem over here? So problem is for next instruction, whenever you are going to access, whenever you are using the next instruction, so at the time the problem is there. So problem यहाँ पे क्या होगी? So if you want to perform execution over here, but execution cannot be performed. Why? Because execution unit is already in use. Not perform execution over here. So to this 2 clock cycle, your next instruction cannot be executed. That is this up to this clock cycle, whatever system is ideal for this instruction, that is called pipeline stall. We have to continue state. So that is called pipeline stalls. Such kind of stall will be there in your pipeline if you are having resource conflict, if you are having resource problem. So that is example that we have discussed, I think, in our last lecture. So यहाँ पे अगर floating point instruction होगी अगर वापस, so again there will it require 3 execution unit. Or that 3 clock cycle, up to 3 clock cycle it will execute your instruction. So again there will be problem over here. यहाँ पे आप execute नहीं कर सकते हो. So that is this kind of stall will be there. So ideally जो ideal situation होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि that 5th clock cycle your 4th instruction will be completed. Then at the next each and every clock cycle your continuous next instructions should be completed. That is ideal scenario. But यहाँ पे क्या होगा? Are we getting any instruction complete? यहाँ पे 6 clock cycle पे कोई instruction complete हो रही है? नहीं हो रही है. Why? Because due to this problem यहाँ पे ये 2 extra cycle लगेगी. That's why we are not able to. Now we have to calculate. So we will see the solution for this. We will see it. Problem is structure here. Is it clear? What is a structure hazard? So, what kind of solution can be done? What is one of the solution for this pipeline stall? So, if to solve this pipeline, if we can achieve this floating point instruction execution in 1 clock cycle, it means that the hardware which we are using, if we will introduce such accelerated hardware, will
execute a floating point instruction by one clock cycle. It means that this is a hardware solution. You need to introduce new extra hardware in your system. But before installing this new hardware, what we have to check, we will check it whether that the efficiency which we are losing due to the pipeline stall, due to this stall, whether the efficiency is, if it is a small amount of loss, then will not introduce hardware. That is, introducing the new hardware will require some cost. आपको कुछ ज़्यादा cost लगेगी वो hardware की. Cost हम bear करेंगे, cost हम pay करेंगे hardware install करने के लिए hardware extra हमारे system में only if your loss is somewhat higher. Efficiency is not too much high, we will tolerate this pipeline stall. So we will not introduce over here. What we will not introduce, we will not introduce this hardware. वो hardware हम यहाँ पे लगाएंगे नहीं. We will allow this pipeline stall and will not deal with structure hazard. यहाँ पे हम structure hazard solve नहीं करेंगे. So पहले हमको क्या करना होगा? What we need to do first? We need to check that. We need to calculate what is the efficiency loss. Efficiency कितनी लॉस हो रही है आपकी? अगर वो ज्यादा है तो ही हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे. अगर वो थोड़ी बहुत ही efficiency loss है, then we will not solve it because solving of problem will require some cost, and we will bear this particular cost only if you are having much loss in your efficiency. So that is an important point. So now what we will do over here, we will calculate this availability, speed up now due to this non-availability of resources. So let's say that, assume that fraction of F of the total instruction means that was 5% of instruction. Fraction means 5% or 10% out of total instruction. So that is indicated by over here fraction. So fraction of F of the total instructions are floating point instruction, which require N plus K clock cycle. N is our normal clock cycle. Normal clock cycle कितनी है? 1. Ideally कोई भी instruction है उसको execution unit में कितना time लगेगा? 1. Normally इसको 1 clock cycle लगेगी, but यहाँ पे for floating point instruction it requires 2 extra. So this is N plus K. So it is K equal to 2 and N equal to 1 over here. So it requires N plus K extra clock cycle. N plus K clock cycle to execute your instruction, floating point instruction. And assume that we are having total M instructions. So out of M, so हमको पहले क्या करना पड़ेगा? Total हमारे पास, suppose assume करो कि हमारे पास 100 instruction है. And I have told you that 5% of this instruction are floating point instruction. Or you can say that, let's consider that we are having total 200 instructions. And out of that, 5% instructions are floating point instructions. So first of all, what you have to do, you have to divide it into two parts. Floating point instruction and over here non-floating point instruction. So floating point instruction कितनी आपके पास? 5%. So 200 का 5% कितना होगा? What will be the 5% of 200? 5% of 200. Getting it? Am I audible? अगर आप रिप्लाई करोगे तो मुझे पता चलेगा कि yes, you are with me. Okay, yes. So 10 means that 10 instructions. 10 instructions are float point instructions. So 10 instructions जो है वो floating point instruction है. तो उसको कितना टाइम लगेगा? And ये बाकी की 190 instructions है, उसको कितना टाइम लगेगा? That is a fraction. So we have considered it over here. So time to execute your M instructions with no pipelining. अगर pipelining आप implement नहीं करोगे तो pipelining implement नहीं करोगे तो क्या होगा? Without using a pipeline, तो उसमें भी आप जो ये जो fraction है, that is your normal instruction, M into 1 minus F. So जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है 200, जनरली क्या करेंगे इसको, कैसे करेंगे? 200 into 0.95. So 1 minus 5 minus 0.5. So that is a 0.95. So इसको जनरली हम ऐसे करते हैं. So this is
m into 1 minus f and over here m into f. So वो जो percentage calculation यहाँ से इसका result क्या मिलेगा 10, इसका result क्या मिलेगा आपको? So what you result you will get 190. So this is a 190 total number of instruction and this is a 10 number of instruction. So we are finding fraction, जो fraction को दिया हुआ है उसके base पे हम number of instructions find कर रहे हैं. And जो आपकी normal instruction है उसको कितना time लगेगा? Non pipelining it will take. So यहाँ पे क्या आएगा 190 into 5. Non pipelining में n की value क्या है 5. पूरे 5 stage fetch instruction, decode instruction like that. So it is taking only 5 stage or 5 clock cycle in non pipelining system. And ये floating point instruction है उसको कितना टाइम लगेगा है 5 plus 2 क्योंकि उसको 2 extra clock cycle चाहिए execution के लिए. So that is a 5 plus 2. So that is a total 7 clock cycle it will require. So that is your answer for this non-pipeline execution. ये आपको non-pipeline execution के लिए. Same way for pipeline execution. अब pipeline execution के लिए आपको क्या करना होगा? So पहली instruction को कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी? The first instruction यहाँ पे डिस्कस किया था that our first instruction itself will be completed in 5 clock cycle. So that is for first instruction it is taking n. Now for next onward instruction, so remaining m minus 1 instruction. और उसमें जो आपकी नंबर इंस्ट्रक्शन है 1 minus f वो आपकी कौन सी इंस्ट्रक्शन देगा without floating point instruction. So that is a normal instruction. So it will take only 1 clock cycle. So अगर आपकी नॉर्मल इंस्ट्रक्शन होगी तो वो तो आपका जो आइडियल सिनेरियो है वो यहाँ पे फॉलो होगा. तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन कौन से होगी 1 minus f जितनी आपकी नॉर्मल इंस्ट्रक्शन होगी. अगर f आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है so 1 minus f आपकी क्या होगी नॉर्मल इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ m minus 1. So यहाँ पे m minus 1 into 1 minus f into 1. And for remaining instruction means for floating instruction f for this fraction of time it requires extra clock cycles. So 2 extra clock cycle will require over here. So that is a number of extra clock cycle will require over here. This is the equation for pipelining. So pipelining का equation क्या हुआ n plus m minus 1 in bracket 1 minus f into 1. यहाँ पे 1 आएगा. So हम यहाँ पे लिखेंगे so 1 minus f plus f into k. Understand it carefully. हम यहाँ पे m minus 1 इंस्ट्रक्शन को अब 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. एक इंस्ट्रक्शन क्या होगी आपकी नॉन फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन. So that is fraction we are getting 1 minus f and f is the floating point instruction. तो इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा पाइपलाइनिंग में सिर्फ 1 क्लॉक साइकिल और इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा एक्स्ट्रा 2 क्लॉक साइकिल. So that is 1 plus so that is the extra clock cycle it will require over here. An extra clock cycle we are indicating. So that is a 2 clock cycle. So that is over here. So if you will solve it, so अब speed up क्या होगा? What will be the speed up non pipelining time upon pipelining time? So that is this is a non pipelining time. ये equation है आपका non pipelining time का. And this is the equation. This is the equation for non pipelining time. This is the equation for pipelining time. So if you will put it over here, and now if you will solve this, so what you will get? So यहाँ पे इसको आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Solve it. mn minus mnf plus mnf plus mfk. So यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे this term will be 0. So now remaining term are mn plus mfk upon this. And if you will take m common, so it will be n plus fk. यहाँ से अगर m common लोगे तो आपको क्या मिलेगा n plus fk. If you will divide it by m, numerator and denominator, if you will divide it by m, so m will be cancel over here. यहाँ क्या आएगा n upon m plus m minus 1 upon m into 1 minus f plus kf. And then ideally, ideal scenario हम क्या consider करेंगे? If your m is very large than n, and if your n is very large than kf, so that case we will consider that approximately the speed up is n upon 1 minus f plus kf. So इसका एक न्यूमेरिक ये नोट डाउन तो आप ये इक्वेशन नोट डाउन करो स्पीड अप का इक्वेशन. If you are having extra time, if you require due to this non-availability of resources, if there are f floating point instructions, then what will the job? So f
fraction of floating fraction, then what is the speed up? N upon 1 minus F plus K into F. Okay, so now based on this, there will be one and floating point instructions take 2 extra clock cycle. Previous case में मैंने 3 extra आपको जो बताया था उसमें जो 2 extra clock cycle लगेगी यहाँ पे वो it's taking 2 clock cycle to execute. Then what will be the speed up? So speed up हम यहाँ पे कैसे calculate करें? So this will become your K and this is your F 10%. So F equal to you can say that 0.1 and K equal to 2. So यहाँ पे आप अगर इक्वेशन में पुट करोगे n is not given, so we'll keep as it is. आपको यहाँ पे n नहीं दिया, so we'll keep this as it is. So what will be the answer? 9 plus 2 into 0.1, so n upon 1.1 0.909. अब अगर यहाँ पे एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी है तो एफिशिएंसी क्या है? स्पीड अप अपॉन what will be the efficiency? So efficiency will be speed up upon n. That it will be 0.909 n upon n. So n will be cancelled. So our efficiency is 90%. So how much efficiency losing? Only 10%. So if only 10% loss, less than 10%. So if only less than 10% loss is there, then we will consider that we will not introduce a new air. So there will be some threshold value. So right now, let's say an example, we'll consider that threshold is 25%. So if your efficiency loss is less than 25%, then we will not introduce a new hardware. But if your efficiency loss is greater than 25%, then we will introduce new hardware. So यहाँ efficiency loss कितना हो रहा है? सिर्फ 10% से भी कम. आपकी efficiency आपको मिली 90.9. So efficiency का loss कितना हुआ? 100 minus this 90.9. That is your loss. So 100 minus 90.9 करोगे तो आपका loss कितना हुआ? सिर्फ 9.1. कितना loss हुआ? So 10 से भी कम है. So that's why we will not introduce a new hardware over here. So is it clear? Are you getting this point? Yes or no? Fraction of time will be given. आपको ये सब कुछ दिया होगा. Beyond that, you are able to give the answer. आपको पता क्या चल रही है? You should be able to get it. Are you getting it or not? Am I audible? Okay. Okay, next. Now, what in pipeline lock का क्या meaning है? Pipeline lock means what? Over here, what we will do? So यहाँ पे आपका जो extra cycle है, over here we are having extra cycle for this floating point instruction. It is taking 2 extra clock cycle. So what we will do in pipeline locking mechanism? In pipeline locking mechanism, we will not allow any another stage to perform any operation during this 2 clock cycle. We will lock our pipeline. So इसका मीनिंग क्या करेंगे हम? यहाँ पे कोई भी ये 2 क्लॉक साइकिल में कोई भी टास्क नहीं, इवन इफ यू कैन डिकोड इंस्ट्रक्शन ओवर हियर. आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, for I+3 instruction, you can decode it. You can decode instruction over here because decoding phase is free. But still we will not perform any operation. You can fetch this instruction from here. यहाँ पे आप instruction fetch भी कर सकते हो. You can decode instruction here. You can fetch, but we will not perform this operation. We will stop our pipeline. We will lock our pipeline. So pipeline will lock during this particular cycle if a particular unit is not available. Particular instruction, suppose यहाँ पे I+2 instruction, अब यहाँ पे आपकी आगे execute नहीं हो पाएगी. क्यों? क्योंकि unavailability of this execution unit. So जब भी ऐसा सिनेरियो होगा तो हम क्या करेंगे? पाइपलाइन को लॉक कर देंगे. पाइपलाइन को लॉक कर देंगे मींस this all other unit will also not execute. इस बाद वाली इंस्ट्रक्शन होगी वो फेच नहीं होगी, डिकोड नहीं होगी. हाँ, इसके प्रीवियस वाली इंस्ट्रक्शन है वो कंटिन्यू रहेगी.
तो ये एग्जीक्यूशन में आपका रहेगा, उसके बाद उसका मेमोरी एक्सेस होगा. सो whenever this execution unit will be found, so now again we will start resuming. So जब कब तक पाइपलाइन लॉक करोगे, जो स्टेज जब ये फ्री हो जाएगा तब तक आप पाइपलाइन को लॉक रखोगे, and then you will release it. So यहाँ पे डिकोडिंग, यहाँ पे फेचिंग will be continued. So आपका वो कंटिन्यू चलता रहेगा. So that is a pipeline lock. What is the advantage of this pipeline locking? So we will see the advantage in our next slide. While in some of the scenario, use this pipeline stall, it might be possible that your I+1 ideally जो आपका जो प्रोग्राम है उसमें क्या होना चाहिए? Ideally I+2 आपकी पहले आ रही है आपके प्रोग्राम में पहले है, and I+3 instruction is your suppose next instruction. So I+2, ideally I+2 should be completed first and then I+3 should be completed. But in some, so we will see example that I+3 will complete first and then I+2 will be completed. पहले ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, बाद में ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी. ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, डेटा डिपेंडेंसी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये कुछ हो, वो मैं आपको एग्जांपल दे नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ. बट ड्यू टू दिस, if you will use pipeline locking over there, so this will never happen. Only I+2 will complete first, then I+3 will be completed, then I+4. So your instruction will be completed in order. So in program, if your instructions should be completed in order, आपने जो order में लिखी है वही order में वो complete हो, ऐसा आप चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? You can implement this pipeline locking as a solution of this pipeline stall. तो यहाँ पे सिर्फ एडवांटेज क्या मिलेगा? इसका एडवांटेज एक ही मिलेगा, कि आपकी इंस्ट्रक्शन है वो सीक्वेंस में कंप्लीट होगी. पाइपलाइन स्टॉल आर स्टिल देयर, पाइपलाइन स्टॉल भी हो रहा है, बट आपकी इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी. So that is a pipeline locking mechanism that we are generally implementing over here in data. So that is what is one of the solutions we have discussed about this hardware, or you can say that resource bundling. So that is we have discussed that is introducing a new hardware. Now, second problem, that is a data dependency. Data dependency हो गई, तो उसमें क्या होगा? First of all, what is a data dependency? So in pipeline execution, delay may be introduced by successive instructions that are not always independent of each other. Due to that, delay may be introduced in your pipeline. So this kind of delay is known as, this kind of problem is known as data dependency, or you can say that data hazard. So the result produced by the one instruction may be needed by the successive instruction, and result may not be ready meanwhile. So यहाँ पे क्या होगा? अगर आप ये इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करोगे, suppose this is a one small code of your program, and in this we are having over here R1, R2, both are source, and your result will be stored in R3. आपका result R3 में store होगा. Same way, multiplication operation will be performed between R3 and R4, and your result is going to be stored in R5. यहाँ पे R7, R2. So यहाँ पे problem क्या होगा? What is the problem over here? So if you will observe over here, so this is a pipelining for the same. ये pipelining solution है. पाइपलाइनिंग इसमें कैसे इंप्लीमेंट होगी? ये जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया उसमें क्या होगा? सो यहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शन फेच होगी, डिकोड होगी, एग्जीक्यूट होगी, मेमोरी रेफरेंस होगी, एंड देन स्टोर. नाउ ओवर हियर व्हाट इज द प्रॉब्लम? यहाँ पे R3 आपका डेस्टिनेशन है, एंड यहाँ पे R3 आपका सोर्स है. R3 is a destination over here. So R3 में रिजल्ट कब स्टोर होगा? So only at this flip clock cycle you will get your result in R3. तब तक आप में आपके R3 में जो वैल्यू होगी वो ओल्ड वैल्यू होगी. ये प्रीवियस सपोज 5+2, so 5+2 इसका आंसर जो 7 आएगा, वो 7 इसमें आंसर कब आएगा? So it will be only at the fifth clock cycle. After fifth clock cycle you will get this answer in R3. Before this fifth clock cycle, if you will access R3, you will get some another value which is not required. वो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहते हैं? R3 की 7. So अगर ये वैल्यू आप चाहते हो तो आपको R3 को रीड कब करना होगा?
So you have to always read after it storing. So यहाँ पे आपको R3 को read करना होगा. So R3 को operand हम read कब कर रहे हैं? So we are reading it in execution phase. So fetching instruction, decoding instruction, and then we have to wait it over here. यहाँ पे आप instruction को execute नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि आपका R3 में जो data चाहिए वो data अभी available नहीं है. So this is one of the problem. This is known as data dependency. यहाँ पे आपका data है R3 का डेटा वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? आपकी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट के ऊपर. सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डेटा डिपेंडेंसी. सो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. सो यहाँ पे आपको वेट करना होगा. सो दिस इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड एट 6 क्लॉक साइकिल, देन मेमोरी रेफरेंस एंड स्टोर रिजल्ट. बट दिस सबट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? R7, R2 एंड R6. सो यहाँ पे R7 एंड R2 आर योर सोर्स and R6 is your destination. So fetch instruction, decode instruction, यहाँ पे कोई problem नहीं होगा. क्यों? कि R7 and R2 this instruction is totally independent. It is not dependent on any previous instruction. वो कोई previous instruction के ऊपर depend नहीं है. इसका result कोई previous instruction के ऊपर dependent नहीं है. R7 and R2 result is not dependent on any previous instruction. So that's why there will be no problem. So यहाँ पे ये instruction execute होगी, memory reference होगी, then store होगी. Now if you will observe over here, so at the 7th clock cycle, your this instruction will be completed. यहाँ पे ये instruction complete हो जाएगी. But your previous instruction is completed at the 8th clock cycle. So this is out of order execution. This is the out of order execution due to this pipe data dependency. So data dependency की वजह से out of order execution हो रहा है यहाँ पे. So this is one of the problem due to this data dependency. And ये जो problem है उसको हम बोलेंगे data dependency problem. And due to this data dependency, your program will be not executed in order. It is out of order execution. And same way for R3 में यहाँ पे क्या होगा? Next instruction increment R3, fetch instruction, decode instruction. Instruction cannot be executed over here. यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन यूनिट आपका फ्री नहीं है. एग्जीक्यूशन यूनिट ऑलरेडी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा है. वी आर हैविंग ओनली वन एग्जीक्यूशन यूनिट. So execution unit is not free. That's why you cannot do this task over here. So execution will be performed over here, memory reference, and then store results. So at the 9 clock cycle, this 4 instruction will be completed. So this is problem due to this data dependency. Now, how many types of data dependencies are there? How many types of data dependency? There are 3 types of data dependency. One is true dependency, second is known as anti-dependency, and third is known as write after write. Or you can say that first one is known as read after write after read, and write after write. These 3 data dependency problems are there. Okay, now let me give you example of each and every type of dependency. So यहाँ पे ये पहला example है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, वही ये एग्जांपल है. इसमें क्या है? अब आपकी जो प्रीवियस, दिस इज आई इज आवर प्रीवियस इंस्ट्रक्शन एंड के इज आवर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. वो दोनों सक्सेसिव हो ऐसा जरूरी नहीं है. आपकी सपोज यहाँ पे आप इसको बोलोगे आई इंस्ट्रक्शन इज देयर, सपोज यहाँ पे आपकी दूसरी कोई इंस्ट्रक्शन है, लेट्स से दैट क्यू, एंड लेट्स से दैट ओवर हियर यू आर हैविंग के इंस्ट्रक्शन. एंड if they are overlapping in execution, then it might be problem. So वो दोनों सिर्फ सक्सेसिव इंस्ट्रक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है. बीच में अगर 1-2 इंस्ट्रक्शन है और उसकी वजह से अगर आपको वो ऑब्जर्व करना होगा कि आप जब पाइपलाइनिंग एग्जीक्यूट कर रहे हो, whether your result is ready or not. If your result is not ready, then you can say that yes, problem is exist over there. Problem यहाँ पे exist कर रहा है. Otherwise, you can say that problem is not exist. So that you have to check it first. So यहाँ पे अगर आपकी पहली इंस्ट्रक्शन है उसमें R2 and R3. Okay, just a minute. I'm just 1 minute. Okay. है? Parents से? हाँ, तो हमारा लेक्चर चालू है तो. So what we were discussing type of data dependency. So first type of data dependency is known as true dependency, or you can say that read after write hazard. So what will be scenario is ये true dependency हम कब बोलेंगे? So if your previous instructions destination register is a part of
source register in your next consecutive 2 or 3 instruction. So over here it will create a problem. क्योंकि ये जो रजिस्टर में आपकी वैल्यू आएगी वो सिर्फ स्टोर रिजल्ट आपका जो 5th फेज है उसके बाद ही आएगी, तब तक इसमें आपका रिजल्ट अवेलेबल नहीं होगा. सो ड्यू टू दैट योर कंसेक्यूटिव इंस्ट्रक्शन, आपकी ये जो 1 या 2 इंस्ट्रक्शन उसको वेट करना होगा. सो ड्यू टू दैट देयर विल बी एक्स्ट्रा साइकिल यू रिक्वायर इन योर पाइपलाइनिंग. सो दैट इज नोन एज ट्रू डिपेंडेंसी. ये जो डिपेंडेंसी है वो ट्रू डिपेंडेंसी है और इसको हम बोलते हैं रीड आफ्टर राइट. So, इसका नाम, दूसरा नाम ये रीड आफ्टर राइट क्यों हुआ? Suppose if you will read this data without this writing has been happen, ये इंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है फिर भी आपने ये रीड कर लिया, तो प्रॉब्लम क्या आएगा? यू आर नॉट रीडिंग अ करेक्ट डेटा, यू आर रीडिंग सम ओल्ड वैल्यू. आपको जो एक्चुअल वैल्यू रीड करनी थी वो आपने रीड नहीं की, आपने कोई ओल्ड वैल्यू रीड की. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रीड आफ्टर राइट हैजार्ड, और यू कैन से दैट ट्रू डिपेंडेंसी. Okay, so that is first. Second is what? Second case में क्या होगा? What will be there in second case? In second case, anti-dependency. It is known as anti-dependency. This is your previous instruction and this is your next instruction. So यहाँ पे आपका जो result है वो आपका जो एक source है R2 और R3, ये आपका source of registers है R2 and R3 as an example, and उसका result हम store कर रहे हैं R1 में. And this is instruction in which we are multiplying R4 and R5 and we are storing result in R2. तो नॉर्मल केस में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, बट सपोज ये इंस्ट्रक्शन आपकी पहले एग्जीक्यूट हो गई ड्यू टू एनी प्रॉब्लम. सपोज दिस इंस्ट्रक्शन हैज बीन एग्जीक्यूटेड प्रीवियस बिफोर योर दिस इंस्ट्रक्शन, so at that time it might create a problem. So this kind of dependency is also known as this it will create a problem. So that kind of dependency is known as anti-dependency. This will be possible in rare scenario, but also it can be possible, but it is in very less. It possibility of happening this is very less, but yes, it is also one kind of dependency, or you can say that type of dependency in which your R2, R3 previous instruction source is this part of your destination in any one of the next consecutive instructions. So that it might be create a problem if this instruction will be executed previously than this. So at that time it might create a problem. So that is known as anti-dependency or right after read hazard. And then this is third type of data dependency, which is known as right after write. So in this case, what will happen? R2 plus R3 and you are storing result in R1. And same way, what we are doing over here, R4 and R5, and we are storing again result in R1. In two consecutive instruction, we are overwriting this R1. आपने R1 की यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको रिजल्ट मिलेगा, लेट्स से दैट 50, यहाँ पे कुछ और रिजल्ट मिलेगा 70. So without using this R1 for any operation or for any another storing it anywhere in memory, you are directly in next consecutive instruction, you are directly overwriting it. So there is no effect of this. इसका ये जो इंस्ट्रक्शन थी उसका जो इफेक्ट होगा वो लॉस हो जाएगा. अगर ये दोनों के बीच में अगर आप कोई दूसरे इंस्ट्रक्शन लिखोगे, then there will be no problem. Suppose यहाँ पे आप उसको R1 को किसी और रजिस्टर में आप ट्रांसफर कर देगो, if you will transfer it into any register, then this problem will be not there. Right after write problem will be not there. क्योंकि आपने वो रिजल्ट यहीं पे स्टोर कर दिया है. बट अगर विदाउट स्टोरिंग इट समवेयर, you are directly again performing next instruction, and in next instruction also R1 is your destination, so that it will create a problem that you will lose this information of this addition result. So that is known as the right after write hazard. ये जो problem है उसको बोलते हैं right after write hazard. So is it clear? These three types of dependency problems are there: true dependency, anti-dependency, as well as right after write hazard. Okay. Now, what are the solution? जो previous problem मैंने जो ये example मैंने आपको बताया था, this is a problem that I have explained you. ये जो example मैंने आपको अभी explain किया था उसमें यहाँ पे out of order execution हो रहा है. At the 8 clock cycle, you are getting second instruction will be completed, and at 7 clock cycle, your third instruction is getting completed.
सो ये आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है, जो मैंने आपको प्रीवियस बताया था, पाइपलाइन लॉकिंग। सो अगर यहाँ पे हम पाइपलाइन लॉक कर देंगे, सो पाइपलाइन लॉकिंग में हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे पहली इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो सकती है विदाउट एनी problem. But for second instruction, fetch instruction and decode instruction, now we cannot execute it because its result is not ready in R3. So जब तक R3 में result नहीं आ सकता, तब आपको क्या करेंगे? So we will lock pipeline. So pipeline locking में हम क्या करेंगे? We will lock all the stages. So ये कब तक लॉक करोगे? जब तक आप नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे तब तक. So we can execute normally from here. So we will again release the pipeline. So यहाँ से आपकी pipeline वापस release होगी. So यहाँ पे execution होगा and this instruction has been fetched. तो वो अब यहाँ पे decode होगी and then execute memory reference. So अगर आप यहाँ पे observe करोगे, then there will be in order execution. आपका जो instruction है वो अब order में ही execute होगी. So that is one of the solution for out of order completion, pipeline locking. We have just discussed the solution of the out of order execution. ये जो data dependency है वो तो अभी हमने solve नहीं की है. Data dependency is still there. Still we have to wait for this time. यहाँ पे store हो जाए तब तक आपको wait करना होगा. So data dependency जो problem है उसको solve कैसे करेंगे? So उसको solve करने के लिए there are two techniques for solving this data dependency. That is called register forwarding and software scheduling, software rescheduling. So we'll see both the technique one by one. So what is a register forwarding? So in register forwarding, first of all, why we are learning it? Register forwarding technique is a solution for your data dependency. आपकी जो data dependency है वो solve करेगी. So it will not solve all kind of data dependency, but it will solve one or two kind of data dependency. So how it will solve it? First of all, what is this operand forwarding? Register forwarding, it is also known as register forwarding, but it is also known as operand forwarding. And this is the hardware solution technique. ये जो है वो hardware solution है. Hardware solution इसको क्यों बोलते हैं? Because we have to introduce a new hardware over here. We have to introduce a new circuit over here. हम यहाँ पे कुछ extra hardware लगाएंगे. So that is a अब वो हार्डवेयर लगाएंगे तो उसका एडवांटेज क्या होगा, कैसे कौन से टाइप का हार्डवेयर लगाएंगे. सो इफ वी विल टेक एग्जांपल, प्रीवियस एग्जांपल, यहाँ पे जो एग्जांपल लेंगे, सो यहाँ पे क्या था, एडिशन, एड R1 R2, तो वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. एडिशन तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कौन से रजिस्टर में मिल जाएगा, B3 रजिस्टर में. बट इट विल बी स्टोर फ्रॉम B3 टू R3 एट दिस मोमेंट. सो क्या हम ऐसी कोई मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं कि ये जो B3 है वो डायरेक्टली आप ALU में प्रोवाइड कर दो और वहां से वो डायरेक्टली यूज कर सके. सो हम यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर सकते हैं. So it means that what we will introduce over here, we will introduce some of the hardware, we will introduce one data path over here, hardware circuit over here, such that your result of the previous instruction can be directly accessed by your ALU for the next instruction. Instead of waiting for store result cycle in the register file, one can provide a path or hardware circuit from this B3 to the ALU input and bypass this to ये होगा, बट वो बाद में चलता रहेगा. बट अभी हमको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में अगर डेटा चाहिए तो हम डायरेक्टली उसको यहाँ से यूज कर सकते हैं. सो वी विल इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ न्यू हार्डवेयर. यहाँ पे R3 में वो डेटा जाएगा, बट वो 5th क्लॉक साइकिल पे जाएगा. तो हम 5th क्लॉक साइकिल पे वेट नहीं करेंगे, हम 3rd क्लॉक साइकिल पे ही क्या करेंगे. सो 3rd क्लॉक साइकिल पे आपका रिजल्ट यहाँ पे B3 में रेडी है. सो फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे अगर यहाँ पे, सो अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे तो एट द 4th क्लॉक साइकिल वी कैन डायरेक्टली यूज दिस आउटपुट. उसका जो आंसर होगा वो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेंगे due to this operand forwarding. So no need to wait it over here. यहाँ पे अब वेट नहीं करना पड़ेगा. Your data can be directly accessed. आप डेटा डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो if this hardware mechanism is implemented. So register forwarding technique. So if register forwarding is done during the add instruction, so वो add instruction, then there will be no delay in pipeline. तो आपकी pipeline में अब कोई delay नहीं होगा. Your pipeline can be executed
without this particular delay. So आपका कोई भी delay implement किए बिना आप यहाँ पे pipeline execute कर सकते हो. तो ये example में क्या होगा? So for this example यहाँ पे execution होगा आपका, फिर यहाँ पे memory access होगा, यहाँ पे store result होगा, and same way ये यहाँ पे decode होगा. So it means that it will be completed faster. यहाँ पे वो complete हो जाएगा. It will be completed in 8 clock cycle. ये 8 clock cycle में आपका task complete हो जाएगा. So that is the advantage of this hardware forwarding. But again, that is require some cost. आपको जब भी hardware solution आप implement करोगे, तो without using cost, कोई भी hardware आपको नया introduce करना होगा, तो it requires some cost. So we have to calculate first whether the cost, we will bear this cost or not, whether the efficiency loss is, if it is much higher, then and then only we will perform this hardware loss. But यहाँ पे अभी आप ऐसा consider करो कि हम ये hard register forwarding is one of the solution for this data dependency. Okay, this is another example. ये एक दूसरा example है that I have kept it over here for intentionally. दूसरा एग्जांपल ये हार्डवेयर फॉर रजिस्टर फॉरवर्डिंग का है, मैंने यहाँ पे एक इंटेंशनली रखा हुआ है. क्यों? क्योंकि मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल. यहाँ पे क्या है? पहली इंस्ट्रक्शन कौन सी है? लोड R2 R3 एंड देन Y. तो इसमें क्या होगा? आपका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन होगा एंड देन memory access will happen, and from that memory your data will be stored in register R2. Now over here add R1 and R2. So if you will observe over here, so R2 is a destination in your load instruction and R2 is a source in your next instruction. So यहाँ पे कौन से टाइप की data dependency है? Which kind of data dependency is there between these two? Which kind of data dependency exists between these two instructions? Whether it is a true dependency, empty dependency, right after right hazard, कौन से टाइप की डिपेंडेंसी है? Am I audible? Are you getting it? Reply me fast. What kind of dependency? If your previous instruction, this is the destination in our previous instruction, and your next instruction source is also R2. So this is which kind of dependency? ये कौन सी टाइप की डिपेंडेंसी होगी? Yes, right after read. Sorry, read after write. True dependency. It is called true dependency. First one. Read after write. True dependency. It is called true dependency. So ये true dependency होगी, तो इसकी वजह से अब यहाँ पे पाइपलाइनिंग में आपका प्रॉब्लम होगा. So this is add R1 R2. So due to this we are having problem in pipelining. यहाँ पे पाइपलाइनिंग में प्रॉब्लम होगा. Same way यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो add and multiply. So यहाँ पे आपका add है वो यहाँ पे R3 है. This is R3 which is again destination, and again R3 is source over here in next instruction. So again what kind of dependency is there? यहाँ पे भी कौन सी dependency होगी? Same. R3 is a destination in our previous instruction and R3 is a source in our next instruction. Same dependency is there. And subtraction instruction R7, R8, R9. This is independent instruction. There will be no any dependency. Now if you will execute the pipelining without register forwarding technique, तो pipelining में क्या होगा? पहली instruction यहाँ पे execute होगी. Then what will happen? Fetch instruction, decode instruction. Can we start execution from here? Can we start execution from here of this instruction? No, because until and unless your result is not ready in R2, you cannot start it over here. So execution will be there, memory reference, so that will be the delay. Same way, यहाँ पे R3 में आपका result store होगा, but वो कब होगा? At the 8 clock cycle. So you have to wait it over here. Fetch decode हो जाएगा, but यहाँ पे execute नहीं कर पाओगे आप. So execution, memory reference, and then store result will be there. And then subtraction ये instruction independent है. R7, R8, and R9 are not used in any previous instructions. You can say that this is independent instruction. तो यहाँ पे क्या होगा? Fetch decode. यहाँ पे execution क्यों नहीं कर पाएंगे? Why we cannot execute it over here? Because execution unit is not free.
So that is a resource problem. यहाँ पे ये जो problem वो resource conflict आएगा. So execution is not free. So यहाँ पे आप execution नहीं कर पाओगे. So execution can be done over here, then memory reference, and then store result. Are you getting this? Now what is the solution? इसका जो solution है वो क्या है? Register forwarding. So register forwarding में हम क्या करेंगे? So जो register forwarding में मैंने आपको बताया था उसमें हम क्या करेंगे? जैसे ही ALU का result आपके पास available होगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे वापस ALU में यूज कर सकते हो. So for this instruction, first instruction, load R3, load data, and effective address calculation will be done and data will be loaded in R2. So fetch instruction, decode instruction, execute instruction, and over here at the fourth clock cycle, are you getting your answer in R2? R2 में आपका आंसर रेडी होगा? Yes or no? Is your answer is ready in R2 at the fourth clock cycle? If it is a load instruction, then can we say that your answer, you can directly get your answer. आप यहाँ पे आंसर डायरेक्टली पास कर सकते हो. ये पर्टिकुलर R2 में नहीं है. अगर R2 में अवेलेबल नहीं है, बट सपोज कोई B3 में अवेलेबल है, क्या ये B3 में अवेलेबल यहाँ पे होगा? Is it available in B3? No, because it is memory reference instruction. ये कौन से टाइप की इंस्ट्रक्शन है? Memory reference instruction. So until and unless you will access memory, you will not get data. So जब तक आप memory access ही नहीं करोगे, तब तक आपको data ही नहीं मिलेगा. So even if you have implemented register forwarding, it will not help. It will not solve problem for memory related instruction. आपकी जो भी memory related instruction है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा. जो डेटा डिपेंडेंसी का वो सोल्व नहीं होगा. So that will remain as it is. So that's why there will be the two clock cycle over here. Two stall, pipeline stall will be over here. And only at this fifth clock cycle, your data will be available in R2, so you can use it over here. Okay, next. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन. So अब ये जो है वो आपकी रजिस्टर टाइप इंस्ट्रक्शन है. तो इसमें आपका जो रजिस्टर फॉरवर्डिंग टेक्निक है वो आपको बेनिफिट होगा. कैसे बेनिफिट होगा? So observe here, fetch instruction, decode instruction, and we have executed instruction over here. It means that addition का आंसर आपका available होगा किसमें? B3 में. So you can directly pass this answer to the next execution unit. Even if your answer is not stored in R3, you can pass it because of this register forwarding technique, hardware. So if hardware is there, then this data can be passed, and now this data can be utilized over here. So multiplication of R4 and new data which is there in R3 that has been performed, so you can execute it over here, and then memory reference and store result will be there. And for this instruction subtraction, what will be there? Fetch instruction, decode instruction. Why we cannot execute over here? Because execution unit is not free, so you cannot execute over here. Same way, why you cannot execute over here? Because execution unit is not free. So that you have to use it over here for this instruction. So this is, if you will observe, so without register forwarding, it is taking 11 clock cycle to complete your this 4 instruction, and with register forwarding, it is taking 10 clock cycle to complete your instruction, this set of instruction. So that is just example. If we are having just 4 instructions, ऐसे ही तो हमारे पास बहुत ज़्यादा instructions होती है. So it will give you much faster result. ये जो आपका register forwarding technique है वो आपको solution provide करेगा data dependency का. And another solution, that is a software rescheduling. Software rescheduling में हम क्या करेंगे? हमारे पास जो set of instruction होगी उसमें से हम identify करेंगे कि कौन सी instruction है वो independent instruction है. So we are having this set of instruction, and out of this set of instruction, we will identify that which instruction is independent, and if you will change order of this instruction, then program, your overall program will not affect. उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर आप ये इंस्ट्रक्शन को पहले एग्जीक्यूट करोगे या बाद में एग्जीक्यूट करोगे. So it should not affect. You have to select such instruction which is independent, and you can rearrange this instruction such that
it will not affect your overall result of your program. So that kind of instruction we will select and we will reschedule it. So we will reschedule करके उसको कहाँ पे रखेंगे? जो दो इंस्ट्रक्शन के बीच में आपका जो प्रॉब्लम था वो दोनों के बीच में ये इंस्ट्रक्शन को हम रीशेड्यूल कर देंगे. So that is software technique. So ये software technique क्यों है? क्योंकि हम ऐसा एक प्रोग्राम लिखेंगे. We will write one such program which will scan your whole program. We will create one software, वो आपकी हर एक इंस्ट्रक्शन को स्कैन करेगा और उसमें से आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पे डेटा डिपेंडेंसी प्रेजेंट है या नहीं है, डेटा डिपेंडेंसी प्रेजेंट है या नहीं है. अगर प्रेजेंट है और ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आपके प्रोग्राम में अवेलेबल है तो इसको रीशेड्यूलिंग, इसको यहाँ पे शेड्यूल कर देगा. सो ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अगर होगी तो इसको शेड्यूल करके जो प्रॉब्लम वाली, जो डिपेंडेंसी वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसके बीच में वो रख देगा. ओके, सो दैट इज So that is over here. So that is over here. So subtraction. So यहाँ पे हम वही कर रहे हैं. We are so previous ये जो execution है वो with register forwarding. ये जो register forwarding वाला जो हमने scenario जो explain किया था उसके साथ. अब register forwarding with register forwarding, if you will use this software scheduling also, then we will execute our program this 4 instruction in 9 clock cycle. How? Look at this. ये जो independent instruction है उसको यहाँ पे ये जो दो instruction के बीच में data dependency थी उसके बीच में मैंने introduce कर दिया, यहाँ पे schedule कर दिया. तो अब यहाँ पे क्या होगा? So now your program will be like this: fetch instruction, decode. So ये continue रहेगा. Same way for this instruction R7, R8 and R9. This is a totally independent instruction. FI, DI, so you can execute, you can decode, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. So ये जो दो क्लॉक साइकिल यहाँ पे आप वेट कर रहे थे, अब वो आपने यहाँ पे रीशेड्यूल करके वो यूटिलाइज कर ली. वो आपने यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो, आप एग्जीक्यूशन यूनिट आप यहाँ पे आपका यूटिलाइज कर रहे हो. और नाउ दिस इज अ एड इंस्ट्रक्शन. तो अब सिर्फ आपको कितना यहाँ पे स्टोर आएगा? एक ही क्लॉक साइकिल का, क्योंकि ये जो 5th क्लॉक साइकिल पे आपको यहाँ पे स्टोर रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो. नाउ देयर विल बी ओनली वन स्टॉल in your pipelining. So your instruction can be completed this in 9 clock cycle. So अगर ऐसी कोई दूसरी इंस्ट्रक्शन भी आपके प्रोग्राम में होगी तो आप उसको भी यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो. अगर ऐसी दूसरी इंस्ट्रक्शन, इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन आपके प्रोग्राम में आपको मिल जाएगी तो ये जो आपको यहाँ पे वेट करना होगा वो वेट यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टाइमिंग भी आप यूटिलाइज कर पाओगे, इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओगे. एंड दिस सो अगर यहाँ पे सपोज 5th इंस्ट्रक्शन होगी आपकी कोई, तो वो 5th इंस्ट्रक्शन भी ये 9 क्लॉक साइकिल में ही कंप्लीट हो जाएगी ड्यू टू दिस रीशेड्यूलिंग. इफ इट इज एन इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन, देन एंड देन ओनली इट विल हेल्प. अगर वो कोई डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन होगी, वापस वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, देन यू कैन नॉट अचीव दिस योर गोल. सो दिस इज software solution and previous one is hardware solution. You can use combination of both. So ये जो example है वो दोनों का combination है जो मैंने यहाँ पे mention किया हुआ है, with register forwarding and software scheduling. दोनों का use करके हम कैसे आपकी pipelining को better कर सकते हैं. So that is how we can avoid this data dependency problem. So is it clear? Any doubt in this? We have completed 2 problem in pipelining. We have completed structure hazard as well as data dependency problems. Is it clear? Are you having any doubt in this? Am I audible? Is it clear? Yes or no? Okay, so in today's lab session also for first 30 minutes or for 1 hour, we will do practical and paper solution. And for last 1 hour, again, we will continue with this theory session. So be